कृपा क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, चैप्टर है इंटरनेट और क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन ट्विटर। ट्विटर इज एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग टूल where people communicate in short messages called tweets. Tweets could be of any nature, jokes, breaking news, thoughtful comments. Users can also attach photos, videos and add links to external websites in their tweets. Businesses and individuals use Twitter to send short messages to their followers. Some people use Twitter to discover interesting people and companies online, opting to follow their tweets. You join with a free account and Twitter name. Then you send broadcasts daily, hourly or as frequently as you like. Tweets may come from your traveling friend in USA who shares his daily discoveries. Your relative in Hong Kong could tweet about the ongoing protests. Another way to communicate with Twitter is through direct messaging. The messages are private between you and the receiver, but keep in mind what you say could still be leaked. So make sure whatever you send is something you would feel comfortable having publicly posted. The default settings for Twitter are public, unlike Facebook or LinkedIn where members need to approve social connections. Anyone can follow anyone on public Twitter. Protected tweets are only visible to your Twitter followers. Twitter as a marketing tool. Thousands of people advertise their recruiting services, consulting businesses and retail stores by using Twitter, and it works. While celebrities use Twitter, Twitter has become one of the most used social media platforms because it is both personal and rapid. Celebrities use Twitter to build a personal connection with their fans. Barack Obama, Justin Bieber, Katy Perry each have more than 100 million followers. On Twitter, following someone is not necessarily an admission of friendship. इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। ट्विटर एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग टूल है। ट्विटर पर हम दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए शॉर्ट मैसेजेस को यूज करते हैं। इन शॉर्ट मैसेजेस को ट्वीट्स कहते हैं। ट्वीट से कई रूप हो सकते हैं जैसे जॉक्स, ब्रेकिंग न्यूज, थॉटफुल कमेंट्स एक्सेट्रा। यूजर्स अपने ट्वीट्स में फोटोज, वीडियोस को अटैच कर सकते हैं और एक्सटर्नल वेबसाइट्स के लिंक्स भी ट्वीट्स में डाल सकते हैं। बिजनेसमैन एंड इंडिविजुअल्स ट्विटर के द्वारा अपने फॉलोअर्स को शॉर्ट मैसेजेस भेज सकते हैं। कुछ लोग ट्विटर पर इंटरेस्टिंग पीपल एंड कंपनीज को डिस्कवर करते हैं और उनके ट्वीट्स को फॉलो करते हैं। आप भी ट्विटर पर फ्री अकाउंट रख सकते हैं। इसके बाद अपनी मर्जी से हर रोज, हर घंटे या जितनी बार चाहे ट्वीट कर सकते हैं। अगर कोई किसी बाहर की कंट्री में घूमने गया है तो वह वहां की फोटोज और वीडियोस अपने ट्वीट्स में अटैच कर सकता है। ट्विटर पर कम्युनिकेशन करने का दूसरा तरीका है डायरेक्ट मैसेजिंग। आपके द्वारा भेजे गए मैसेज प्राइवेट होते हैं, पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि डायरेक्ट मैसेजिंग में भेजे गए मैसेजेस भी लीक हो सकते हैं। इसलिए कोई भी ट्वीट करने से पहले ये बात श्योर कर लेनी चाहिए कि अगर हमारा मैसेज पब्लिक में पोस्ट हो जाए तो हमें कोई परेशानी ना हो। ट्विटर की डिफॉल्ट सेटिंग पब्लिक होती है। फेसबुक पर हम अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट को अप्रूव करते हैं, पर ट्विटर में हम किसी भी पब्लिक ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर को एक मार्केटिंग टूल के रूप में भी यूज किया जाता है। सेलिब्रिटीज ट्विटर को बहुत यूज करते हैं जिससे उनका फैंस के साथ पर्सनल कनेक्शन बनता है। बैरक ओबामा, जस्टिन बीबर, केटी पेरी, इन सभी के 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ट्विटर पर किसी को फॉलो करने का मतलब उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं होता।
अगर आप ट्विटर पर फर्स्ट टाइम के लिए अकाउंट ओपन करते हैं तो शुरू में आपको सिर्फ अपने दोस्तों और जानने वालों को ही फॉलो करना चाहिए। अगर आप ट्विटर पर नए हैं तो ट्विटर आपको कुछ सेलिब्रिटीज या कुछ अन्य लोगों के बारे में सजेशन देता है। जैसे जैसे आप ट्विटर के पुराने यूजर हो जाते हैं तो आपके इंटरेस्ट और प्रोफेशन एक्सेट्रा के बेसिस पर ट्विटर आपको किसी को फॉलो करने के लिए बेटर सजेशन देने लगता है। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you.